Very good morning to all of you, my dear students. In the previous video, we discussed about the concept of federalism and what the federalism is. About that, we saw there as federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. Okay, and there are the two levels of the government that is formed by the federalism. One is the government for the entire country, that is usually responsible for a few subjects of common national interest. We discussed that. And the second is government at the level of provinces or states that look after much of the day-to-day administration of their regions, and they have their own specific jurisdiction. Also, we discussed about the key features of federalism, that there are two levels of or two tiers of government. Different tiers of government have their own jurisdiction regarding to their legislation, taxation, and that of the administration. The existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed, means nobody can redraw that powers. The changes in the fundamental provisions of the constitution require the consent of both the levels of the government. No unilateral decisions could be made by any layer of government, and courts have their specific powers to play a role to interpret the constitution and the power of different level of government, and Supreme Court plays the role of an umpire. Okay, so sources of revenue means the economical growth for each level of government are clearly mentioned to ensure its financial autonomy, means autonomous. The federal system has dual objectives. First, that is the safeguard and promote unity of the country. Okay, so at the same time, it accommodates the regional diversity. So all these things we have discussed in the previous video, and here to balance the power between central and state government, we have to see how federations are formed. Okay, means the exact balance of power between the central and state government varies from one federation to another. Means all federations that are formed are not on the basis of same condition. Okay, so that's why here in this video we will see how are federations formed. There are two ways through which federations are formed. दो तरीके हैं federations के बनने के. First, that is the coming together type of federation. Coming together type of federation means, suppose that this is first person, second, third and fourth. As you can see, when they will meet together, they will form a federation. वे क्या बनाएंगे? एक फेडरेशन बनाएंगे. And independent states come together and form a bigger units. So here they have not joined, only they have come together. मतलब वो एक साथ मिले हुए हैं, but they have not lost their powers by pooling their sovereignty and retaining their identity. वे अपनी पहचान को खोते नहीं हैं, ना ही वे अपनी सॉवरेनिटी यानी जो उनकी जो संप्रभुता है उसको वो खोते हैं. दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी एंड रिटेनिंग देयर आइडेंटिटी. मतलब जैसे कि वो एक फेडरेशन के तहत जब वो आ जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा हमारे भारत में भी बहुत तरह के संघ बनते हैं, जैसे बहुत सारे दल बन जाते हैं, बहुत सारी पार्टियां बन जाती हैं, बहुत सारे फेडरेशंस बन जाते हैं, और हर कोई उस फेडरेशन से जुड़ करके अपने आप को क्या समझता है कि मैं इस फेडरेशन का सदस्य हूं, तो बाकी जो फेडरेशन के सदस्य होंगे अगर मेरे साथ किसी तरह की कोई घटना घटती है तो वो मेरे साथ खड़े होंगे, या फिर जुलूस निकालना हो, या फिर रैली निकालनी हो, या फिर प्रोटेस्ट करना हो, तो वो फेडरेशन के जो लोग होते हैं एक साथ होते हैं. तो उसी तरह यहाँ पर कमिंग टुगेदर फेडरेशन में होता क्या है कि कोई भी स्टेट अपने आइडेंटिटी को खोता नहीं है, बल्कि वो उस आइडेंटिटी के तहत अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहता है, इसलिए वो फेडरेशन में शामिल हो जाता है, उस संघ में शामिल हो जाता है ना. एंड दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी स्टेट ऑफ इक्वल पावर्स. मतलब उनका पावर्स भी इक्वल होता है. ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट का पावर कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है. दे हैव इक्वल पावर, दे शेयर इक्वल पावर्स. फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन है जहाँ पर हर स्टेट को इक्वली क्या मिलता है? सिक्योरिटी मिलती है और इक्वल राइट्स मिलते हैं. लेकिन जो इंडिया की बात करेंगे तो सेकेंड दैट इज होल्डिंग together type of federation, means just this, like see
this like federation. So one is the central power here, and all these are state governments. Okay, so a large country decides to divide its power between constituent states and the national government. So this central government will be national government, and all these parts where the holding capacity is in the national government or in the central government. Okay, and the national government, the central government is more powerful दैन स्टेट्स. यहाँ पर याद रखना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अधीन ज़्यादा पावर होता है और बाकी ये उससे क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड दैट ऑफ द बेल्जियम. So here in this part you have understood that there are two types of federation. Federations are formed by two ways. First, that is coming together type of federation, where equal powers are shared by the all the coming together states, and they increase their security by involving them and involving the federations. And second, that is the holding together type of federation, where the central authority have more power than its states. So in this way federations are formed there. Okay, so federal system is very important, as powers are shared by the state government also and national government also. सबके द्वारा पावर को क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है. The central government can pass an order to the provincial or local government, means this is the central government, so it can pass the order to the state governments. Okay, and they are dependent. The state government has powers of its own for which it is not answerable to the central government के प्रति आंसरेबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल यू शो देयर आर सम क्राइटेरिया ऑन विच इट कैन takes the decisions, like administration, police, and then after that of the taxation system and how it has to rule its boundaries. So that is अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में होता है. और इस तरह जो ये हाउ आर फेडरेशन फॉर्म्ड, आई थिंक दैट यू हैव अंडरस्टूड. फर्स्ट, दैट इज द कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन, एंड सेकेंड होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन. सो फेडरेशंस मीन्स कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, सभी स्टेट अपनी सिक्योरिटी के लिए उस फेडरेशन में शामिल हो जाते हैं और इक्वल पावर को क्या करते हैं, शेयर करते हैं. जबकि होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, जो सेंट्रल पावर होता है उसके हाथ में कुछ ज़्यादा पावर्स होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ कम होते हैं. लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स को भी अपना कुछ पावर मिला होता है जिसके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति उत्तरदायी मीन्स आंसरेबल नहीं होता है. ओके स्टूडेंट्स, सो हाउ फेडरेशंस आर फॉर्म, ओनली दीज थिंग्स आई हैव मेड यू टू अंडरस्टैंड इन दिस स्लाइड. आई थिंक दैट यू विल enjoy the video. Okay, thank you.